Okay, welcome back, students. Let's move on to the next set of question. Question number 5 is on screen. Aranya Limited imported goods from Bluebird Limited of US worth 1,50,000 US dollars, and the date is 1st December 2013. Exchange rate on that day was rupees 60. Okay, and these are the payments to be done. Why? Because you have imported goods, right? इम्पोर्ट किया मतलब आपने परचेज किया है, परचेज किया मतलब आप पेमेंट करोगे, यू विल मेक द पेमेंट. सो हाउ आर यू गोइंग टू मेक पेमेंट? इन दीज 1, 2, 3, 4 installments. Okay, first payment on 31st December, then 15th January, 10th Feb, and then 30th April. Okay, and these are the exchange rates. और आपको कंपेयर करना है ये एक्सचेंज रेट 60 रुपीज से, राइट? तो इन द फर्स्ट केस यू आर पेइंग 60 अगेन 60, सो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है. ठीक है, तो एफईएफ अकाउंट नहीं बनेगा. करेक्ट. नेक्स्ट, 60 रुपीज के सामने यू आर मेकिंग पेमेंट ऑफ 62. करेक्ट, यू आर पेइंग मोर, सो 2 रुपीज लॉस. नेक्स्ट, 60 रुपीज के सामने यू आर मेकिंग पेमेंट ऑफ 59, सो यू आर पेइंग 1 रुपी लेस, तो 1 रुपी प्रॉफिट. ओके, 60 रुपीज के सामने यू आर मेकिंग पेमेंट ऑफ 65 रुपीज, तो यू आर पेइंग 5 रुपीज मोर, मतलब लॉस. Okay, so this is how you're gonna compare. Now it is saying that Aranya Limited closes its books on 31st March every year, and on 31st March 2014 the exchange rate was 63 rupees. So year end पे exchange rate कितना हो गया है? 63 rupees. Pass necessary journal entries. Don't forget this, that 31st March 2014 को आपका exchange rate है 63 rupees. Okay, yeah. So you have to pass necessary journal entries for 31st March 2014, and they have asked you for 15 also. Okay. Also prepare FEF account for the relevant years. Okay. So this is a full-fledged question. Right. So let's start. Okay. Yeah. So first transaction. Yeah. 60. So this was the part, just a minute. So this is the first transaction that is coming into picture. Yeah, talking about this. Okay, this one, this. So first transaction is this. So you can note this down. This is your first transaction. Purchase account debit to Bluebird, 1st December 2013. Okay. So how are you going to calculate this? It is $1,50,000 multiplied with 60 rupees per dollar. So that comes to 90 lakhs. Okay. Narration may you can mention being goods worth $1,50,000, exchange rate 60 per dollar imported. Okay. Then you are making the payment on 31st December 2013. Okay. And the payment that you are making is 20,000 US dollars, and the rate that day was 60 rupees. So 12 lakhs rupees. So 60 rupees ke against में 60 rupees you are paying. So no profit, no loss. Neither profit, neither loss. So that is the reason in this FEF account is not prepared. FEF comes into picture only when there is a exchange rate difference. If there is no exchange rate difference, then FEF account will not come into picture. Okay. So this is obviously repetition of this. Yeah. So yeah, you can. Okay, so that's journal entry number 2. Then you can go with journal entry number 3. That is the second payment that you are making on 15th of January. Okay, how much you are paying? Yeah, you are going to pay 62 rupees, right? So $40,000 multiplied with 62 rupees. So it comes to 24,80,000. See, you are paying the payment, right? You are making the payment in cash. Okay, and कितने का लॉस हुआ आपको? 2 रुपए का लॉस हुआ है. तो 40,000 इंटू 2, 80,000. 2 रुपए कैसे? बिकॉज एक्सचेंज रेट था, या जब तुमने डील किया था उस दिन यूएस डॉलर था 60 रुपीज, 1 US डॉलर, और जिस दिन पेमेंट कर रहे हो उस दिन कितना है? 62. तो 2 रुपए का लॉस हो गया ना, तो ये लॉस आप इधर रिकॉर्ड करोगे. ओके,
Then journal entry number 4, when you are making the third payment on 10th February. Okay. So how much you are paying? Your deal was at 60 and you are making payment of 59. 1 रुपया कम पे कर रहे हो, मतलब 1 रुपए का तुमको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, देखो इधर प्रॉफिट आया। हाँ, राइट। $60,000, $60,000 मल्टीप्लाइड विद ₹1 per dollar, तो 60,000 rupees, $60,000 into 59 rupees per dollar, so 35 lakh 40. Okay, and $60,000 and the deal was at 60, so 36 lakhs. And as I have told you all earlier also, your debit should match your credit totally. Okay. Narration writing style will not change. It is same for all. Yeah. Same narration style you can use. The same manner, being money paid for so and so US dollars, exchange rate difference, whatever is the exchange rate difference as per the question. And whether it's a profit or loss, you have to transfer it to FEF account. Okay. So that's makes it to journal entry number 1, 2, 3, 4, and then journal entry number 5. Okay, when you're making the payment. Okay, yeah. Now, yeah, the payment is, yeah, on the revaluation date. You can, I'll just make you, yeah, see, yeah, just, you can see this. So, देखो, ये पेमेंट तुमने किया, ये तुम्हारा फर्स्ट पेमेंट है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और ये तुम्हारा थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट है। ठीक है, फिर क्या है, जो तुम्हारा फोर्थ इंस्टॉलमेंट है वो 30th अप्रैल को है, लेकिन 30th अप्रैल से पहले 31st मार्च आएगा ना, ये 31st मार्च 2014 ईयर एंड होगा। तो ईयर एंड होगा तो ईयर एंड का रिवैल्यूएशन भी तो होगा। करेक्ट, ईयर एंड का रिवैल्यूएशन कैसे होगा? आई मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू ऑल। 1,50,000 US डॉलर्स का तुमने डील किया है, जिसके सामने तुमने 20,000 का पेमेंट कर दिया है, जिसके सामने तुमने 40,000 का पेमेंट कर दिया है, जिसके सामने तुमने 60,000 का पेमेंट कर दिया है। तो 40 प्लस 60 1 लाख, 1 लाख प्लस 20, तो टोटल 1,20,000 का तुमने पेमेंट कर दिया है। तो 1,50,000 के सामने 1,20,000 का पेमेंट हो चुका है। तो देर इज अ डिफरेंस ऑफ हाउ मच, $30,000, जिसका पेमेंट 31st मार्च ईयर एंड तक तो नहीं हुआ है। ओके, 31st मार्च तक ये पेमेंट तो नहीं हुआ है। और इधर देखो, 30th अप्रैल बैलेंस पेमेंट कितना किया है, 30 का, ये मैच ही होना चाहिए ना, तभी तो टैली होगा। करेक्ट, लेकिन ये जो आपने फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे किया, आपने 31st मार्च के बाद पे किया। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, ईयर एंड जब क्लोज होगा तभी आपको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा ये 30,000 का। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी फॉर रिवैल्यूएशन, मतलब द डिफरेंस, द 30,000 डिफरेंस वाला पार्ट का होगा। ओके, या, सो आपका डील कितने पे हुआ था? 60 पे, करेक्ट। और ईयर एंड पे आपका रेट क्या है? ईयर एंड रेट कितना दिया था क्वेश्चन में? 63, 63। तो 3 रुपए वैसे भी आप ज्यादा ही दे रहे हो ना, तो 3 रुपए का तो लॉस है ही आपको। तो वो रिवैल्यूएशन पे आपको कैलकुलेट करना है, ₹3 का जो लॉस हुआ है। ओके, तो राइट दिस जर्नल एंट्री नंबर 5, ये देखो ₹3 का जो लॉस हुआ है। ओके, तो FEF अकाउंट डेबिट टू ब्लू बर्ड। ओके, द डिफरेंस इज $30,000, या इनटू ₹3 per dollar, तो 90,000, balance 30,000 US dollars, rupees, yeah, being bluebird revalued as a creditor because it's purchase ना, import हुआ है, तो purchase मतलब creditors will come into picture. You can use these narratives to write your narration. Being bluebird revalued as a creditor, $1 62 at the year end. No, it is 63 at the year end. $1 is 63 at the year end. Exchange rate difference, $1 US, ₹3 recorded in FEF account. Okay. I hope this part is clear to everyone. You just have to remember this. जो भी आपने डील किया है उसका कैश रिसीव होना चाहिए अगर आपने सेल्स किया है, और उसका पेमेंट होना चाहिए अगर आपने इंपोर्ट किया है। Okay, it should tally. If it doesn't tally, so whatever is the balance amount at the year end, you have to revalue it. Okay,
सो लाइक दिस, ये 30,000 का जैसे मैंने अभी रिवैल्यू निकाल किया है वैसा। ओके, फिर क्या, फिर वही AS11 जो बोलता है कि FAF अकाउंट आपको क्लोज करना है, करेक्ट या। सो इस सम में तो FAF अकाउंट पूछा है तो आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज बिना FAF अकाउंट के भी आप अपना लेजर बैलेंस निकाल सकते हो। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Without that also you can revalue your FAF account. Okay, so see this, I have prepared an FAF account for the year 2013-14. Okay, the year end is 31st March 2014, मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, 1st April 2013, राइट? सो इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर 13-14. That is right, is right. Okay, so there were 3 journal entries related to FAF account. Okay, yeah, yeah. So 80 plus 90 minus 60, so 1,10,000 का डिफरेंस है FAF में, that will be transferred to PNL. Okay, so my journal entry will be PNL account debit to FAF. Okay, and you can mention here working note number 1. You can put working note number for the ledger. Clear? Now once you are doing the, yeah, I mean here, working note number 1. Okay, then there will be a, yeah, year end closing also. 14-15. Then you will come in the accounting year 2014-15. So उसमें ये फर्स्ट एंट्री होगा और ये वाला एंट्री सेकंड होगा. ओके, सो या प्लीज बी स्पेसिफिक अबाउट दिस. ये जो एंट्री है ना, 2 एंट्री, दिस इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2014 एंड 15. सो उसमें फर्स्ट एंट्री ये होगा, कौन सा वाला, ये जो आपने एक 4th इंस्टॉलमेंट बाकी था ना पे करने का, हम्म, वो 30,000, ये इंस्टॉलमेंट पे करना है ना 30,000 वाला वो. ओके, ये वाला, ठीक है, 65 रुपीज पे उसका एंट्री भी आएगा. ठीक है, so 2000, they have asked you journal entry for 13-14 and 14-15, so you have to pass. So 13-14 में there are 6 journal entries. Okay, and 14-15 में there are only 2 journal entries. ठीक है, yeah. So 30,000 into how much, 65 rupees you are paying, so 19,50,000 and 30,000 into कितने का लॉस हो रहा है, 2 रुपीज का. कैसे 2 रुपीज का, आई विल टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दिस. 31st March 2014 को क्लोजिंग रेट कितना था, 63 था, बराबर. और 30 अप्रैल को आपने कितने में पेमेंट किया, 65 पे किया, तो 2 रुपए का हो गया ना लॉस. ओके, 63 क्यों लिया, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स में बी हैविंग डाउट कि डील तो अपना 60 पे हुआ था, डील 60 का है, तो 63 क्यों लिया, क्योंकि क्लोजिंग एक्सचेंज रेट 63 था, तो नेक्स्ट ईयर 14-15 में वही आपका ओपनिंग एक्सचेंज रेट बनेगा 63. Am I clear, students? I repeat, whatever will be the closing exchange rate. So 2013-14, the closing exchange rate is 63 rupees as per the question. So 1st April 2014 को, that is next year, ये बन जाएगा मेरा ओपनिंग रेट. तो अभी ये 60 रुपीज भूल जाओ.
अभी नया रेट क्या है 63, और आपने पेमेंट किया 65 पे, तो 2 रुपए का आपको लॉस हो गया है। तो ये 2 रुपए का लॉस आप इधर रिकॉर्ड कर रहे हो। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो दिस विल बी 30,000 into 63 and not 60. Okay, everyone please make a note of this. Yeah, this part. Many students make errors here. 30,000 into 63, 18 lakh 90. Okay, I will again repeat. You have to consider the opening exchange rate for the next year. Okay, the last year's closing exchange rate will become the opening exchange rate for the next year. Okay, don't forget that. And then you will have to prepare a FEF account for the second year, and there was only one transaction. So when you close this ledger, you get a balance of 60. Okay, and that you are going to record here. Fine. Here you are going to record. See, ये आपका first journal entry और ये आपका second journal entry for the second year. Okay. So I hope this concept which I told today, एक तो वो रिवैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट के वीडियोस में भी किया है, जो बैलेंस हम पे करते हैं आउटस्टैंडिंग डॉलर्स पे भी। ओके, और आज के सम में हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा कि अगर आपको 2 साल का जर्नल एंट्रीज पूछा है एज पर AS11, तो जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग एक्सचेंज रेट होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग एक्सचेंज रेट बनेगा। ओके, so I hope this part of the video is clear to everyone. Let's meet in the next video.